So under section 23 subsection 5, house property held as stock in trade for a period up to 2 years. So this is applicable in case where the accessee is builder or he is a property dealer, because what they do, simply they just buy or they construct the properties and they held with them. They will not let it out during the year, and initially अपने पास as a stock in trade they keep these properties, fully constructed properties को अपने पास रख लेते हैं, उसके बाद they sell it off. तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो है where a property dealer or a builder has any kind of building और लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू, ये हम पहले डेफिनेशन में क्लियर कर चुके हैं कि बिल्डिंग के साथ साथ लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस heading, that is income from house property. So in case any builder or a property dealer is having any building or land appertinent thereto as a stock in trade, and so there is a and condition, and the property or any part of the property is not let out during the whole or any of the previous year. ठीक है, so only as a stock in trade उसने वो building या फिर जो भी लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू थी वो उसने अपने पास रखी हुई है एज अ स्टॉक इन ट्रेड, बिकॉज फ्यूचर में ही वांट्स टू सेल इट आउट, प्लस उसने वो बिल्डिंग या वो प्रॉपर्टी या लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू किसी को रेंट पर भी नहीं दी हुई है. ठीक है, सो अगर ये दोनों कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो उस केस में द एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी or part of such property shall be taken as nil for the period up to 2 years from the end of the financial year in which the certificate of completion of construction of the property is obtained from the competent authority. Okay, so अगर ऐसा कोई केस है तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आपकी प्रॉपर्टी या आपकी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी whatever the case may be is the construction is completed, जिस फाइनेंशियल ईयर में उसके अगले 2 साल तक the annual value is your NAV, that could be taken as nil, but this is only for the period up till 2 years. उसके बाद it will be calculated as per the rules of your house property. ठीक है, सो ये सिर्फ 2 साल के लिए नील रहेगी. सो ये एडवांटेज दिया है इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने टू द बिल्डर्स एंड टू द प्रॉपर्टी डीलर्स कि इन केस दे हैव एनी बिल्डिंग, एनी फ्लैट, एनी प्रॉपर्टी और एनी लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू, और वो उसे एज अ स्टॉक इन ट्रेड रख रहे हैं, वो उसको लेट आउट भी नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में 2 साल तक उनकी एनएवी नील रहेगी और उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा. सो फॉर एग्जाम्पल, X Limited, a builder, has constructed a house in Mumbai and the construction got completed on 1st December 2019. It has obtained a certificate of completion of construction of the house from the competent authority on 1st May 2020. तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड हुआ है आपका फाइनेंशियल ईयर 1920 में, बट सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन कब मिला है? फाइनेंशियल ईयर 2021 में. सो जो आपका कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट मिलता है उस ईयर से अब आप 2 साल तक उसकी वैल्यू क्या रखोगे? निल. तो फाइनेंशियल ईयर 2021 जब आपका प्रीवियस ईयर 2021 होगा, 21-22 होगा, उस केस में आपकी वैल्यू विल बी जीएवी वैल्यू विल बी निल. 2021 सॉरी लेट मी जस्ट करेक्ट इट. आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 में मिला है तो उससे अगले 2 साल, सो 21-22 एंड 22-23 ऐसे लिखा हुआ है ना आपके उसमें कि जिस फाइनेंशियल ईयर में सर्टिफिकेट मिला है उससे अगले 2 साल. तो ये 2021 नहीं, उससे अगले 2 साल तक आपकी वैल्यू क्या रहेगी? निल. एनएवी रहेगा निल. बस कंडीशन है कि वो जो प्रॉपर्टी थी जिस पे आप निल लिख रहे हो, वो प्रॉपर्टी या एनी पार्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी जिस पे आप ये निल ले रहे हो, इट शुड नॉट बी लेट आउट एट ऑल ड्यूरिंग दैट टाइम. स्टार्टिंग से लेकर अब तक आपने एक बार भी उसको लेट आउट नहीं किया है, उस केस में वो निल है. एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2023 the notional annual value will have to be computed as per the rules of the house property. इन केस उन्होंने सेल ऑफ कर दिया फिर तो वो केस ही हट जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर तो वो ओनर के केस में अपने आप कैलकुलेट होगा. इन केस बिल्डर ने लेट आउट कर दी है उस प्रॉपर्टी को, बेचा नहीं है, तो फिर एज अ लेट आउट वो उस बिल्डर के
रिलेशन में वो सारा कंप्यूट होगा. बट बस एक ये उनको बेनिफिट दिया है कि इन केस आप लेट आउट भी नहीं करते हो और आपकी जो जो आपकी कंस्ट्रक्शन, ये था ना, जो आपकी बिल्डिंग और जो लैंड अपॉर्टुनेंट आपने एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखी हुई है और आप लेट आउट भी नहीं कर रहे हो, इन दोनों कंडीशंस में क्या होगा, आपकी वो 2 साल तक एनएवी को निल मान लेंगे फ्रॉम द ईयर इन विच द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन. ठीक है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन है, नॉट द ईयर इन विच द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन हैज कंप्लीटेड. सो ऑलवेज नोट कि जिस टाइम पे सर्टिफिकेट मिलेगा उस फाइनेंशियल ईयर से अगले 2 साल. क्लियर है सबको? एनी डाउट्स इन दिस? कोई डाउट है इसमें? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट वन? Okay, so next section is 26, which is joint ownership, and that we have already discussed in the initial slides of your house property. Co-owner का हमने ये तीनों पार्ट भी हमने डिस्कस करे थे. I'm just quickly revising you all along with one question. So if a house property is owned by 2 or more persons, then such persons are known as co-owners, and this is the case of your joint ownership. Okay, jointly 2 or more persons are the owners of the same property. If respective shares of co-owners are definite and ascertainable, then the share of each person shall be included in his total income. So जो भी आपकी computed आएगी income of house property, उसका share आप calculate कर लोगे, because you know that the shares are ascertainable, they are definite. It may be noted that co-owners are not taxable as an association of persons. So ये 3 points we have already discussed. So there is 2 more additional points in which where house property is self-occupied by each co-owners. So in case जो owners हैं, co-owners हैं, वो प्रॉपर्टी को जो को ओन करते हैं, दैट इज सोलली फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपेशन, अपने रहने के लिए उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है. तो उस केस में जो आपकी मैक्सिमम डिडक्शंस है अंडर सेक्शन 24B, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी. सो जो ये आपकी मैक्सिमम डिडक्शंस है, हमने डिस्कस किया था 2 लाख है या फिर 30,000 है एज पर द केस. तो जो ये आपकी मैक्सिमम डिडक्शंस है, इट इज for each of the co-owner. It is not aggregate. It is in respect of each of the co-owner. तो अगर suppose 7 co-owners हैं एक ही property के, तो 7 के 7 को 2 लाख और 30,000 whatever the case पूरी की पूरी डिडक्शन मिलेगी. ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सबको मिला के बस 2 लाख की मिलेगी या फिर 30,000 की मिलेगी. ठीक है, तो दिस इज फॉर ईच co-owner. Second case, where the entire or part of the property is let out. So if it is let out, then don't waste your time for calculating the house property income for each of the co-owners separately. Instead, you can just compute the house property assuming that there is only one owner, और जो आपका आंसर आ जाएगा उसको you can just simply divide between the co-owners in the share, in their shares, which is already ascertainable. इतना शेयर इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है. ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में इट इज इंपॉर्टेंट टू डू इट इंडिविजुअली बिकॉज दीज मैक्सिमम डिडक्शंस आर एज पर इंडिविजुअल केसेस. बट जब लेट आउट है तो उसमें यू डोंट हैव टू वेस्ट मच ऑफ योर टाइम, यू कैन जस्ट सिंपली कैलकुलेट एज पर देयर इज ओनली वन ओनर, और जब हो जाएगी कैलकुलेट उसके बाद बस शेयर्स में डिवाइड कर देना जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया है उसी रेशियो में बिटवीन ऑल द ओनर्स. ठीक है, so suppose this is your illustration that Mr. X and Mr. Y are equal owners of a house in Mumbai. The property has 4 units of which X and Y each own 2 units. Okay, the property has 4 units or X or Y are equal owners and both of them are owing 2 units each. Each of them has let out one of 2 units on monthly rent of rupees 15,000. Each unit remains vacant for 1 month
and the other unit is self-occupied for own residence. Other expenses in respect of the property shared equally by the co-owners, repairs, municipal taxes, interest on capital borrowed on May 6, 1998 is rupees 1,35,000. So this is very simple. Just try it out. पहले मिस्टर एक्स के लिए निकाल लो, फिर मिस्टर वाई के लिए निकाल लो. वैसे आंसर्स विल बी सेम बिकॉज every data is same. They are equal owners. Even the property is vacant for just 1 month. So whatever the value you will calculate for Mr. X, the same value will be for Mr. Y. So just do for Mr. X. एक यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी एंड एक यूनिट उसकी लेट आउट है. So just try to solve it and then I'll show you the solution. प्रीवियस स्लाइड कौन सी, जॉइंट ओनर की? यस मैम. Anchal has given me the answer. Priya let out 71,000. Self-occupied 30,000 loss. Okay. So self-occupied के केस में NAV तो you know that it will be nil क्योंकि आपके म्युनिसिपल टैक्सेस तो अलाउड है नहीं, तो NAV आपका नील है. स्टैंडर्ड डिडक्शन कोई मिलती नहीं है, खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में. और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या है? टोटल 1,35,000. यूनिट्स कितनी है आपकी? टोटल यूनिट्स है आपकी 4, राइट? Ma'am, the capital borrowed is before 1999. So total deduction 30,000 नहीं होगी? 30,000 होगी ना. पहले 1,35,000 का तो डिवाइड बाय 4 कर लो, हर यूनिट का निकालोगे ना. 4 यूनिट्स है ना, तो 4 यूनिट्स में 1,35,000 को डिवाइड बाय 4 करोगे तो अमाउंट आता है 33,750. And if I say about self-occupied के केस में, since the loan is taken prior to 1999, so the maximum deduction allowed is just rupees 30,000. So self-occupied में 30,000 का लॉस है बस. ठीक है. अब दूसरा केस आता है आपका लेट आउट. अब लेट आउट क्या है? मंथली रेंट पे दिया हुआ है 15,000.
So each unit remains vacant for 1 month. So आपका वो लॉस माइनस हो जाएगा उसमें से, राइट? So 15,000 एक्चुअल में क्या होगा? 15,000 into just 11. So आप करिए 15,000 into 11. 1,65,000 will be your GAV in this case. Getting my, there is no expected rent, right? कोई वैल्यू नहीं गिवन, तो आपका GAV will be your actual rent received and receivable. Actual rent received कितना हुआ है? Only for 11 months because it was vacant for 1 month. तो 15,000 into 11 हमने किया. Empty paid. Now empty paid कितना था? 60,000. This was for the entire house, and the house has 4 units. So 60,000 divided by 4 is 15,000. So 15,000 is allowed to be reduced now. NAV आया आपका 1,50,000. इस पे डायरेक्ट आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाया 30% का, so it is 45,000. और in case of let out, the entire interest is allowed as deduction without any maximum limit. So entire 33,750 is allowed as deduction. So the unit 2 income from house property is 71,250. So 71,250 minus loss from unit 1 30,000. So the total taxable house property income is 41,250. And apart from Priya, no one has attempted it correctly. Bache, this house property income na, it's very simple, but you should pay attention to each and every word which is written in the question. ठीक है? अगर 4 यूनिट की बात है ना, तो अपने दिमाग में रखना है कि every figure is now going to be divided by 4. यहाँ पे 15,000 डिवाइड बाय 4 नहीं होगा, क्योंकि जो एक यूनिट है वो 15,000 रुपए पे रेंट पे दी गई है. तो इस केस में बस ये नहीं होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द एंटायर प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी वाली तो सारी डिवाइड बाय 4 होगी ना, बिकॉज देयर आर 4 यूनिट्स. सो मिस्टर एक्स का आ गया 41,250. सेम, बिल्कुल सेम आपके मिस्टर वाई का आ जाएगा. इट्स जस्ट दैट इसकी यूनिट 1 एंड 2 अज्यूम करी हूँ या इसकी यूनिट 3 एंड 4 अज्यूम करी हूँ. देन आंसर विल बी एग्जैक्टली सिमिलर, क्योंकि इस केस में बोथ ऑफ द पार्टीज वर इक्वल ओनर. अगर शेयर चेंज होता तो आंसर भी चेंज हो जाता आपका. सो एनी डाउट्स टू एनीवन इन दिस क्वेश्चन? क्लियर? Should I move? So now this is under section 25, which is interest payable outside India. So अभी तक हमने section 24B के अंडर जो डिडक्शन करी है वो हम ये कर रहे हैं कि इंटरेस्ट, अभी तक जितने भी हमारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थे, कि इंटरेस्ट इज पेबल इन इंडिया ओनली. हमने अभी तक फॉरेन कंट्री का कोई कंसेप्ट नहीं डिस्कस किया था. जो भी लोन लिया था दैट वाज फ्रॉम द इंडियन बैंक ओनली, और इंडियन बैंक से लिया था या फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हूसोएवर, बट हमने इंडिया का ही लिया था. Now in this case it is interest payable outside India. So if a loan is taken from outside India and the interest is payable outside India, then such interest is allowed as deduction if, so there are two conditions in this. If he deducts tax from the interest before paying it to the bank outside India. पहले तो वो टैक्स डिडक्ट करेगा, whosoever is the payer. ठीक है? In case he is individual, in case he is company, in case he is business firm, whatever the case, first he has to do, they have to deduct the tax from the interest, whatever interest they are paying. जितना उस पे इंटरेस्ट बनता है, जितना उस पे टैक्स बनता है, वो उनको डिडक्ट करके नेट अमाउंट उनको पे करना है. दूसरी कंडीशन, जो भी टैक्स दे हैव डिडक्टेड दैट शुड बी डिपॉजिटेड विद द इंडियन टैक्स अथॉरिटीज. जो आपकी इनकम टैक्स अथॉरिटीज है इंडिया की, उनको आपको ये डिपॉजिट भी करना है. ये दोनों चीजें करनी है आपको. पहले तो यू हैव टू डिडक्ट द टैक्स बिफोर पेइंग द इंटरेस्ट इनकम टू द बैंक आउटसाइड इंडिया,
Similarly, you have to deposit that tax amount to the Indian tax authorities. If both the conditions are satisfied, then the interest will be allowed as deduction under section 24B. ठीक है, और अगर आप नहीं करोगे तो it will not be allowed as deduction. So there are many cases जब हम TDS करेंगे, that is tax deducted at source, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ये सैलरी में आएगा अभी आपका, उसमें हम डिटेल में करेंगे. यूजुअली आपके इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाउड टू डिडक्ट द टैक्स बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट्स. जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना आपके नेचुरल पर्संस, वो नहीं कर पाते हैं एक्सेप्ट इन फ्यू एक्सेप्शनल केसेस. आपके यूजुअली कंपनीज और जो आपके एम्प्लॉयर्स होते हैं ये आपका टीडीएस करते हैं, या आपके बैंक्स जो होते हैं. बट इन अ नटशेल यू शुड ऑलवेज बी रिमेंबर कि जब भी क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा आ गया दैट इंटरेस्ट इज नाउ बीइंग पेड आउटसाइड इंडिया, तो हमेशा दो कंसेप्ट पे ध्यान रखना, चाहे कोई भी एक्सेस हो. ये मत सोचना कि इंडिविजुअल कर सकता है, नहीं कर सकता, या कंपनी करेगी या बिजनेस करेगा, कुछ मत सोचना. अगर आउटसाइड इंडिया है, सिर्फ दो पॉइंट्स पे ध्यान रखना कि क्या टीडीएस कट रहा है, और अगर कट रहा है तो क्या डिपॉजिट हो रहा है. अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो यू विल गिव द डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B. अगर दोनों में से एक भी नहीं हो रही है तो यू कैन नॉट गिव द डिडक्शन. There is an and condition, both the conditions should be satisfied. So let's just understand this with the help of an example. X Limited, so it's a company. X Limited has purchased an office building in New York by taking a loan from Bank of America based in New York. The building is let out at the rate of rupees 2 lakh per month. Municipal taxes paid are rupees 95,000 and the expenses on repairs and maintenance are rupees 3 lakhs. The company is liable to pay interest of rupees 5 lakhs to the Bank of America. Calculate house property income on the basis of following assumptions. So there are three assumptions. First assumption is that the company has done TDS and has paid the amount to income tax authorities. In the second case, they have done the TDS but they have not paid the amount to the income tax authorities. And the third assumption is that the company has not done TDS. So it's very simple. First calculate your GAV, your NAV, your standard deduction, and then we'll come to this point, that is section 24B वाला. उससे पहले तक सारा सॉल्व कर लो आप लोग. So just calculate its NAV and its standard deduction under section 30. So in this case, there is no expected rent, so actual rent will be equal to your GAV. So 2 lakhs into 12 is your 24 lakhs. So 24 lakhs में से now you will subtract the municipal taxes paid, that is 95,000. Expenses on repairs and maintenance figure is useless. The next is the company is liable to pay interest of rupees 5 lakh. So उससे पहले तक you just have subtracted 2 lakh minus 24 lakh minus 95,000. 24 lakh minus 95,000 is NAV is 23 lakh 500 23 lakh 5,000 rupees. Standard deduction 30% पे direct दे दिया आपने. So this is 6 lakh 9,000 91,500. So this is similar in all the cases. ये तीनों के केस में calculation till standard deduction is same. That is 6,91,500 आपकी standard deduction तीनों में same रहेगी, तीनों का NAV same रहेगा. अब आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, और सेक्शन 25 में साफ साफ बोला गया है कि ये तभी मिलेगा जब या तो कंपनी या जो भी आपका एक्सेसी है उसने टीडीएस काटा है और सेम हैज बीन डिपॉजिटेड टू द इनकम टैक्स अथॉरिटीज. सो आपका जो केस 1 था, सिर्फ यही केस सेटिस्फाई था जिसमें दोनों कंडीशंस हो रही हैं आपकी, कि इसने टीडीएस भी किया है, इसने पे भी किया है. दूसरे वाले में एक में टीडीएस पे काट तो लिया है, पेमेंट तो उसको नेट में दे दी है, बट अभी तक डिपॉजिट नहीं कराया है. और दूसरे वाले में कि उसने टीडीएस काटी नहीं है. तो इन तीनों केसेस में सिर्फ फर्स्ट वाले में 5 लाख
जो एंटायर आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि मैक्सिमम कोई डिडक्शन नहीं है, ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, then the entire interest on capital is allowed as to be reduced apart from the other cases. और आपका फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया. सो ये आपका केस वन है, दैट इज 11,13,500, और इन दोनों के केस में 16,13,500. So is it clear to everyone? Any doubts? Please discuss. ठीक है बेटा आपका प्रिया. Any doubts to anyone? Please share. कोई डाउट नहीं है? Okay, so now this is the second important few important topics which we will discuss. These are the miscellaneous topics and there is no separate section for each of them. So first is advance rent. So in case the tenant has given us any rent which is in advance, then it means it will not be taxable in the year in which it is received, but it will be taxable in the year to which it relates to. ठीक है. अगर कोई टेनेंट मुझे 5 महीने का पहले ही एडवांस में रेंट दे देता है, तो इट इज नॉट माई लाइबिलिटी टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट राइट नाउ. भले ही उसने मुझे आज की डेट में वो दे दिया है, बिकॉज इट इज नॉट फॉर द मंथ्स विच इज एक्चुअली ही इज लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. जो 12 महीने का उसको पे करना है वो 12 महीने का ही पे करेगा ओनर. वो एडवांस रेंट का नहीं पे करेगा. वो एडवांस रेट का जब पे करेगा जब वो एक्चुअल में ड्यू होगा आपका. ठीक है. तो अगर कोई भी एडवांस रेंट मिल जाता है तो वो आपको टैक्सेबल नहीं करना है उस प्रीवियस ईयर में जिसका वो नहीं है. वो आपका जब फ्यूचर ईयर आएगा वो उसमें टैक्सेबल होगा. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, a property is let out at the rate of rupees 10,000 per month and the owner has received rupees 1,50,000 as rent, which includes rupees 30,000 as rent for financial year 2021. So 1,50,000 आपका अमाउंट आपने क्या था 10,000 पर मंथ के हिसाब से आपने रेंट पे दिया था, तो 12 महीने का होता है 1,20,000. But instead the tenant has given the owner the rent of rupees 1,50,000, जिसमें से उसने बोला कि 30,000 is for the financial year 2021. So उसने एडवांस में रेंट दे दिया. So in this case you'll bifurcate this 1,50,000 into two parts, 1,20,000 and 30,000. 1,20,000 will be taxable in previous year 1920 and this 30,000 will be taxable in previous year 2021. ठीक है. जब भी एडवांस रेंट का कंसेप्ट आ रहा है तो इट मींस यू हैव टू एक्सक्लूड दैट अमाउंट. वो आपका नेक्स्ट ईयर जिस ईयर को वो बिलोंग करता है उसी ईयर में इट विल बी टैक्सेबल. ठीक है. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना. अगर ऐसा कंसेप्ट हो जाएगा कि एडवांस रेंट टैक्सेबल होने लग गया तो फिर ओनर के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. तो अगर टेनेंट कभी भी अपना बचाने के लिए अपना रेंट क्या होता है कि आप जब सैलरी कंप्यूटेशन करोगे ना, जब आपको पता चलेगा कि एक हाउस रेंट अलाउंस करके भी चीज होती है जिसमें सैलरीज में डिडक्शंस एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं आपके अलाउंसेस में, अगर आप एक्चुअल में रेंट पे करते हो. तो अगर रेंट पे अगर वो एडवांस रेंट पे कर रहा है तो उसको तो एग्जेम्पशन मिल रही है, बट ओनर के लिए तो प्रॉब्लम आ रही है ना कि ओनर को थोड़ी उसकी भी एकदम से इनकम टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी अगर रेंट वो उसी साल एक्चुअल रिसिप्ट में ही अगर उसी साल वो कंप्यूट करेगा तो. इसलिए गवर्नमेंट ने कह रखा है कि एडवांस रेंट हम नहीं करेंगे. एडवांस रेंट भले ही टेनेंट दे दे, अपनी खुशी से वो दे रहा है, but it will not be added to the income tax liability of the owner. ठीक है. This is next topic, that is security deposit. So आप लोगों ने सुना भी होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होती है. जब भी कोई रेंट पे आप देते हो कोई प्रॉपर्टी तो आप टेनेंट से पहले 1 महीने का एडवांस ले लेते हो. आप एक एज अ सिक्योरिटी अमाउंट ले लेते हो 1 महीने का, और आप ये बोलते हो कि जब आप छोड़ोगे ना हम तभी आपको दे देंगे. क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि काफी बार टेनेंट डिफॉल्ट कर जाता है पेमेंट में, तो उस टाइम ये सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को एडजस्ट कर लेते हैं ओनर्स. तो कोई 1 मंथ का ले लेता है, कोई 2 मंथ का इन एडवांस ले लेता है एज अ सिक्योरिटी अमाउंट की व्हेन यू विल वेकेट माय प्रॉपर्टी आई विल रिफंड इट बैक टू यू. ठीक है. तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है इट इज नॉट एक्चुअली अ इनकम बट इट इज अ लायबिलिटी. Right? It is a liability for the owner because he has to refund back that amount to the tenant at the time of vacating the property.
सो उसकी लाइबिलिटी है, इसलिए इट विल नॉट बी एडेड अप. बट इन केस द ओनर is adjusting the security deposit against non-payment of rent, then such adjusted amount will be regarded as income and will be taxable as house property income. अगर वो adjust करता है उसको तो. But in case he is not adjusting, then security deposit will not be added as a income from house property. ठीक है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो यू ऑलवेज हैव टू एक्सक्लूड इट until and unless it is specifically mentioned that the owner has adjusted some part of it against the non payment of the rent. अगर कुछ एडजस्ट किया तो एडजस्ट फिर उसमें आप एक्चुअल रेंट में यू कैन जस्ट एड इट अप, अदरवाइज इसको एक्सक्लूड रखना है. Then the third miscellaneous topic is your disputed ownership. So in case there is a disputed ownership, कोई केस चल रहा है अगेंस्ट बिटवीन द ओनर्स और कुछ भी चल रहा है कि आपका ये थ्रू मतलब आपके एंसेस्ट्रल कोई प्रॉपर्टी है वो नीचे आई है, फिर कोई डिस्प्यूट हुआ है, कोई केस चल रहा है, तो वट एवर द केस इज, इस केस में भी आपकी रेंट इनकम टैक्सेबल होगी फॉर द पर्सन हु इज रिसीविंग द रेंट. ठीक है, ओनरशिप भले ही डिस्प्यूटेड है, बट इन केस एनी पर्सन इज रिसीविंग द प्रॉपर्टी बाय receiving the rent by letting out that property, so उस केस में whosoever is receiving it, he has to pay tax to the government under the head of income from house property. ठीक है, then property in foreign country. So अगर कोई भी प्रॉपर्टी है फॉरेन कंट्री में, अगर किसी की भी, और रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया, since the rent is received in India, then it becomes a Indian income, right? This we have already covered in the incidence of income. कि अगर कोई रेंट इंडिया में रिसीव हो रहा है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इंडियन इनकम एंड इट विल बी टैक्सेबल फॉर आरओआर, एनओआर एंड एनआर, क्योंकि इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल irrespective of the residential status. But in case the property is located in foreign country as well as the rent is also received outside India, then it becomes a foreign income and it will be taxable only in case of ROR. याद है ये, फॉरेन इनकम हमेशा आरओआर के केस में ही टैक्सेबल होती है, एनओआर के केस में सिर्फ दो केस में टैक्सेबल होती है. आप एक तो आपका बिजनेस कनेक्शन वाला पॉइंट होता है, सॉरी बिजनेस सेटअप वाला पॉइंट होता है, एक आपका प्रोफेशन सेटअप वाला पॉइंट होता है, राइट? सो दिस इज, वैसे अगर हम नॉर्मल बोले तो फॉरेन इनकम सिर्फ आरओआर के लिए ही आपकी टैक्सेबल होती है. और जो भी आप म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर रहे हो, इवन इफ इट इज आउटसाइड टू द लोकल अथॉरिटीज इन दैट पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री, वो भी आपकी अलाउड है टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम योर जीएवी. ठीक है, और दिस वाज गिवन इन केस सीआईटी वर्सेस आर वेणुगोपाला रेडियर इन 1965, जिसमें ये डिसाइड हुआ था, जिसमें ये आपका आउटकम था कि अगर आप कोई भी म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर रहे हो बाहर टू देयर म्युनिसिपल अथॉरिटीज, वो भी आप अलाउड हो, यू कैन रिड्यूस इट फ्रॉम योर जीएवी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर एनईवी फिगर. ठीक है, तभी हमारा जो ये इससे पहले वाला एग्जांपल था जिसमें था इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पेड आउटसाइड वाले में, हम लोगों ने 24B में जो डिडक्शन दी थी वहां पे आपका म्युनिसिपल टैक्सेस का भी था क्वेश्चन में पॉइंट कि म्युनिसिपल टैक्सेस पेड आर ₹95,000. सो हमने वो रिड्यूस किया था, वो इसीलिए रिड्यूस किया था क्योंकि इट इज अलाउड इन योर income from house property that whatever municipal taxes you are paying even to our government or to the foreign government, it will be allowed to be reduced. ठीक है, so this is it, this completes your unit of income from house property. In case of any doubts, please let me know. What if the rent is outstanding? बच्चे आउटस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट तो हम लोगों ने यही करा है ना कि हमेशा रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल के केस में होता है. अगर आउटस्टैंडिंग होता है हमारा, अगर वो पे नहीं करता तो फिर वो तो हमारा अनरियलाइज्ड बन जाता है ना. गेटिंग माय पॉइंट कि आउटस्टैंडिंग है बट स्टिल ही इज नॉट पेइंग अस द रेंट, देन इट बिकम्स अ अनरियलाइज्ड कंसेप्ट. अनरियलाइज्ड रेंट के केस में वी हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स. देयर आर 4 कंडीशंस अंडर योर रूल नंबर 4. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड है तो अनरियलाइज्ड रेंट विल बी अलाउड टू बी रिड्यूस्ड, अदरवाइज यू कैन नॉट रिड्यूस इट. और वो क्या क्या स्टेप्स थी? यही स्टेप्स थी दैट द टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड, ऑल द रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द ओनर इन ऑर्डर टू रिकवर द रेंट. He has taken the legal steps. He has even convinced the assessing officer that the legal steps is useless.
or the case may be whatever I have discussed in rule number 4. तो वो आपका unrealized बन जाता है. Any doubts to anyone? Then I'll share the notes by today evening. ठीक है, test will happen most likely on Saturday. So कल से हम लोग salary शुरू करेंगे. Let me just stop